Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Finish Educare. Welcome to the 9th chapter of 10th Maharashtra State Board History. The 9th chapter is Heritage Management. So in this chapter we will study how we should manage the heritage. See, whatever things we get in history, like we are getting historical books or we are getting manuscripts or some sculptures or some painting or statues, these are all heritage. These are the sources of history. So this source of history should be managed properly, should be taken care properly. If this sources of history are getting destroyed or if they are not handled properly, so future generation will not know about this. So whatever the historical data we have should be handled properly or should be kept should be stored properly. Or and suppose there is a person or historian who wants this data, देन ही शुड बी प्रोवाइडेड विद दिस इन्फॉर्मेशन. सी कोई अगर हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहा है तो उसे अलग अलग स्टैचूज़ के बारे में स्टडी करना पड़ता है, बुक्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है. तो जो लोग अगर अगर हमने उस स्टैचूज़ को या बुक्स को स्टोर करके रखा तो जो हिस्टोरियन है जो स्टडी करने वाला है उसे वो मिलेगा. सो the management of heritage is very important. So in this chapter we will study what are the different ways in which we can manage the heritage or we can manage the source of information. So we will complete this chapter in 4 parts. In the first part we will talk about sources of history, their conservation and preservation. So what are the different sources of history, how we can conserve them or how we can preserve them. Then some famous museums. So there are different museums in India also and there are different museums in world also. We will study where are the different museums located and what are the different information that is stored in that museum. Then in the third part we will talk about libraries and archives, and in the last part we will talk about encyclopedias. So let us begin with the first part. See, the source of history and all the history books that are available today are the results of diligent work of several historians. So whatever the source of history that we are having or whatever the historical books are having, books that we are having, this is because of the diligent work or because of the hard work done by the several historians. Institutes like libraries, museums and archives conserve and preserve this precious historical heritage. So whatever books we are having or whatever statues we are having, all these statues, books, etc. are stored in archives or in libraries and museums. So libraries में आपको पता होगा कि अलग अलग बुक स्टोर करके रखते हैं, म्यूजियम्स में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स या स्टैच्यूज सब स्टोर करके रखते हैं, और आर्काइव्स में जो हिस्टोरिकल डेटा है वो या लेटर्स है या फिर बुक्स है वो स्टोर करके रखते हैं. So all these things are storing the historical information. So or they are storing our precious historical heritage. They choose important specimen from the heritage collection and exhibit them. स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन मतलब एक मॉडल होता है. सपोज वी टॉक अबाउट स्टैचूज, तो सभी स्टैचूज हम म्यूजियम में नहीं रखेंगे. सो प्रदर्शन के लिए रखते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं, तो उसमें से एक स्टैचू हम लोगों को दिखाने के लिए रखेंगे. दैट बिकम्स अ स्पेसिमेन और सैंपल. So one sample is shown to the people, so that becomes a specimen. So they are storing or they are exhibiting the specimen to the people. Exhibiting matlab they are showing the specimen to the people so that people can see the specimen or the sample statue and they can get the information regarding the statues. They also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, posters, etc. So they are doing research on this historical data and they are publishing magazines or journals or pamphlet or leaflet, poster, etc. So documents and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatment for their conservation and preservation. See, all the historical data we are having are not exhibited. सभी को हम एग्जीबिशन में नहीं रखते या सभी को वहाँ म्यूजियम में नहीं रखते. कुछ डेटा हम रखते हैं म्यूजियम में, कुछ डेटा हम स्टोर करके रखते हैं. जैसे सपोज हमारे पास 100 स्टैचूज है, हिस्टोरिकल स्टैचूज है, उसमें से हम 100 के 100 स्टैचूज नहीं रखेंगे एग्जीबिशन के लिए, लोगों को नहीं दिखाएंगे. उसमें से कुछ सैंपल अराउंड 5 to 10 स्टैचूज हम दिखाएंगे लोगों को, बाकी सब स्टैचूज हम स्टोर करके रखेंगे म्यूजियम में. सो देर आर सम प्रोसेस दैट शुड बी डन बिफोर स्टोरिंग दैट. सो वी शुड चेक हाउ मच द ओल्ड स्टैचू इज, देन वी शुड टेक केयर अबाउट दैट स्टैचू. अगर वो स्टैचू कुछ खराब हुआ है तो हमें क्लीन करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. आफ्टर डूइंग दिस वी शुड स्टोर दैट स्टैचू. सो बिफोर एग्जिबिटिंग
before exhibiting archives after completing necessary treatment for the conservation and preservation. So we should do different treatment, कुछ chemicals use करके या कुछ यूज करके हमें उसे कंजर्व करना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए. Those documents and artifacts are made available to researchers as then when necessary. So whenever the researchers are going or historians are going and they are requesting the information, then we should give that information. Suppose we are having very old book, ये ओल्ड बुक हम जाके लोगों को नहीं दे सकते क्योंकि लोग कैसे भी उसको हैंडल करेंगे और वो बुक खराब होने का बहुत चांसेस है. तो हम क्या करेंगे, आर्काइव्स में या फिर हम म्यूजियम्स में उसे स्टोर करके रखेंगे. तो जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं और जो रिसर्च करते हैं उन लोगों को ही हम वो बुक अवेलेबल करके देंगे. उस बुक का हम स्कैनिंग करके PDF फाइल में कन्वर्ट करेंगे सो दैट इफ द बुक इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड देन ऑल्सो वी विल हैव द इंफॉर्मेशन विद अस. दैट इज डिजिटल इंफॉर्मेशन. Libraries conserve, preserve and manage the books. So libraries are conserving, they are protecting the books, then they are preserving or storing the books, and they are managing the books. See, libraries are having lakhs of books or thousands of books. तो सभी बुक्स को मैनेज करना पड़ता है. अलग अलग सेक्शन होता है, हिस्ट्री का अलग सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस का अलग सेक्शन, इकोनॉमिक्स का अलग सेक्शन. तो सब अलग अलग सेक्शन की बुक अलग अलग सेक्शन में हमें रखना पड़ता है सो दैट इट इज ईजियर टू मैनेज द बुक्स एंड ईजियर टू कलेक्ट द बुक्स, गेट द बुक्स. See, then source of history, their conservation and preservation. Each step like collecting the source of history, creating their record and indexes, exhibiting manuscripts, old books, artifacts after completing necessary treatment requires very careful handling and management. So from collecting the information, from collecting the books, then we are creating record of the books, and then we are creating indexes, एग्जिबिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. जो एंशिएंट बुक्स है, हैंड रिटन बुक्स है, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम एग्जिबिट करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. देन वी आर स्टोरिंग द बुक्स इन द लाइब्रेरी. सो ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर लॉट ऑफ मैनेजमेंट. So we have to manage them carefully. If we are not managing them carefully, then there are chances that the books will get destroyed. So we should handle all these books or all these documents very carefully. We should handle these documents very carefully and we should manage those documents very carefully. It needs people with specific skills. Only trained person who are duly qualified can take up this task. तो ये सब मैनेज करने के लिए उसे अलग अलग बुक्स को अलग अलग तरीके से रखने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स लोगों का जरूरत होता है. So these people are having some specific skills and they are trained to handle this historical data. Suppose we are getting all kind of books, so we need to list the books or we need to separate the books, segregate the books among history books, political science books, science books. अलग अलग बुक्स को अलग अलग कैटेगरी में हमें कैटेगराइज करना पड़ता है. So people who are doing this are having lots of knowledge about all the subjects and they are having skills to handle this kind of information. So we need skilled people. Then the history or the historical source, it is divided into different types. First we will talk about oral source. ओरल सोर्स मतलब हमारे पास जो पोएम्स है या फिर कोई रिकॉर्ड है या ये हम स्टोर करके रखते हैं. दिस आर ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सी कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा. सो सपोज हमारे पास फोक सॉन्ग है, ये फोक सॉन्ग वहाँ एक एरिया के लोग बोलते हैं या गाते हैं, लेकिन उस एरिया के लोग अगर वो गाना बंद कर देंगे तो ये वर्ल्ड को उस फोक सॉन्ग के बारे में पता नहीं चलेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to record that folk songs and we have to make the cassettes and or we can store them on the digital platform also, like we can store them on our computer hard disks. और सब करके हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को अगर वो फोक सॉन्ग सुनना है तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए. देन folk tales means stories. So stories and songs both need to be preserved so that future generation will get to know about the stories. Then classifying, analyzing and interpreting the compiled material. So compile करने के बाद पूरा अगर हमने फोक सॉन्ग या फोक टेल स्टोर करके रखा, उसके बाद हमें उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ का फोक सॉन्ग्स अलग अलग है. सपोज वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट के फोक सॉन्ग अलग अलग है. सो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि सपोज आई टॉक अबाउट कोंकण रीजन, सो कोंकण रीजन इज हैविंग सम डिफरेंट फोक सॉन्ग. If suppose we talk about Vidarbha region, so Vidarbha region is having some different folk song, or we talk about Khandesh region, so they are having some different folk song. Marathwada is having some different folk song. So we need to categorize them, or we need to classify them. Then analyzing or checking
and interpreting, or we need to verify whether the compiled material, or compiled means stored material, is correct or not, or we need to categorize that. Publishing the result of respective research, तो ये सब रिसर्च करने के बाद हमें रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है कि क्या हमने फाइंडिंग किया. सो दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली. देन we need to give necessary training to the people who are doing these things. So there are different fields that we need to be aware of. First is sociology. Sociology means study of society. So society के बारे में हमें study करना पड़ता है. Then anthropology. Anthropology means study of origin of human beings. Human beings का जो origin है उसके बारे में study करते हैं, और human beings का एक दूसरे के साथ जो interrelation है उसके बारे में हम study करते हैं. That branch is called as anthropology. Then social psychology. Psychology of the people, thinking of the people, that we need to study. Then mythology. Mythology means जो हमारे पौराणिक कथा है, जो कथा है गॉड के बारे में, जो हमारे स्टोरीज है उसे स्टडी करना पड़ता है. Then linguistics means study of languages. Then library science and information technology. So library science में जो लाइब्रेरियन होते हैं या फिर जो लाइब्रेरी के बारे में स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको अलग अलग तरीके के बुक्स हैंडल करने के लिए, अलग अलग डेटा हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है. ऑल्सो we need to use information technology. Information technology is very important. See, the book that I am studying, that I am teaching, is a electronic book, or it is converted into electronic book. So this book can be used anywhere. We don't need to carry our hand or book. So that book hard copy use करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास soft copy है. Soft copy means electronic copy. So if we convert all the books into electronic books, so we can use that books anywhere we go. So there is no need to carry a physical book. Also information technology or IT can be used to manage the libraries. See, libraries में अलग अलग टाइप के बुक होते हैं. लोग भी आते हैं लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करते हैं और अपने घर चले जाते हैं या वहाँ जाके रीड करते हैं. अगर हमने IT में या कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें पूरा डेटा स्टोर होगा कि किसने बुक लिया, कभी रिटर्न करने वाला है, रिटर्न किया कि नहीं किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर दिया. So it is very important, or it is very easy to manage the books. So information technology is very important. Then history and historical research method. So history and historical research method, study about history. So we are studying about historiography. So that is also important. Then writing and research reports and articles. So सी सब मैंने रिसर्च किया, उसके बाद जो रिपोर्ट्स है वो आर्टिकल्स हमें पब्लिश करना पड़ता है. जो हिस्टोरियन रिसर्च करता है उसका जो फाइंडिंग्स होता है वो एक रिपोर्ट में या एक बुक में पब्लिश करता है. सो दैट राइटिंग द रिपोर्ट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन वी विल टॉक अबाउट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सी रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, लिखा हुआ जो हिस्ट्री है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. सो जो कॉइन्स पे लिखा था या कोई आर्टिफैक्ट्स पे लिखा था या फिर कोई स्टोन्स पे लिखा था, पेंटिंग्स किया था, दिस आर ऑल रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. So collecting coins and copper plates with the inscription on them. So copper plates पे जो inscription है, जो अलग अलग languages में लिखा हुआ है, this is the written source of history. Or on the coins, we are having different types of coins, on ancient coin. So these coins are written source of history. Coins के ऊपर कुछ लिखा हुआ है. So these are written source of history. Then there is some inscription on them. Inscription means something is written on them. Documents like official record, personal correspondence and diaries, and historical books, old books, manuscripts, pictures, photograph, etc. So documents like official record. Official record means कोई वहाँ का जो गवर्नमेंट था, किंग का रूल था, किंग ने जो ऑर्डर्स निकाला था, that are official record of the king. So that need to be preserved, that need to be stored, or that need to be studied. Then personal correspondence and diaries. So अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था, या जो भी हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, अकबरनामा, या फिर जो दुजुके बाबरी, जो बाबर ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था. दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री और रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिजर्व. देन historical books or ancient history books, like we have talked about various books like Rajata Rangini. These are various books that are ancient books. These books also need to be preserved or also need to be studied. Then old books, manuscripts are handwritten books. Then pictures, photograph, etc. This all needs to be preserved. तो ये preserve करेंगे तो future generation को या history के research करने के लिए use होगा. Then completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for conservation and preservation of collected documents. See, जो collected documents हमें मिलता है ये अच्छे तरीके से नहीं मिलता है. ये कोई old document है तो ये बहुत खराब हो जाता है. So we need to use some chemicals to clean that and to preserve that. So cleaning and completing necessary mechanical and chemical process
for cleaning of cleaning for conservation and preservation of collected documents. So cleaning is very important. क्लीन करने के बाद हम उसे प्यूरिफाई करेंगे और उसे स्टोर करेंगे. अगर कोई फटे हुए पेजेस है या फिर कुछ है खराब हुआ है तो उसे स्टिच करेंगे या फिर कंपाइल करेंगे, सो दैट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो क्लीनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिला, जो बुक्स मिला या फिर कोई सॉर्ड मिला कोई किंग का, या फिर कोई स्टैचू मिला या कोई स्कल्पचर मिला, सभी का एक वैल्यू होता है, हिस्टोरिकल वैल्यू होता है. ये वैल्यू हमें चेक करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि कोई आपको पता होगा कि जो ओल्ड पेंटिंग है या फिर ओल्ड स्टैचू है उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, लाख और करोड़ रुपीज़ में वैल्यू होता है. सो टू चेकिंग द वैल्यूज और टू फाइंडिंग द वैल्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट. सो सब डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, एग्जीबिशन नहीं करेंगे उसका. ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट, ओनली सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आर एग्जिबिटेड सो दैट पीपल कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट. देन पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट. सो जो भी एडिटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स के हमने स्टडी किया उसका रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट पीपल हु आर न्यू or people who don't know about that document, they can also study about that document. Suppose there is one book that is written in another language, or if you talk about English, अभी बहुत सारे लोगों को इंडिया में इंग्लिश पता नहीं है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बुक है, हिस्टोरिकल बुक है, तो जिसे इंग्लिश आता है वो बुक स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद मराठी में, हिंदी में उसका रिपोर्ट पब्लिश करेगा. So people who can understand Marathi and English, they can also read the report and they can also understand what is written in the book. So publishing edited documents and research reports is very important, so that people who don't know about that book or people who don't know about the history, they can also understand. Then what are the necessary training that should be given? First is knowledge of scripts like Brahmi script, Modi script, Persian script and their development. सी जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है जो मराठी हम लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट, ये अलग अलग स्क्रिप्ट है. जो स्क्रिप्ट, जो भाषा जो लिखते हैं हम, ये अलग अलग स्क्रिप्ट है. वैसे एंशिएंट टाइप पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे. मोदी इज ऑल्सो स्क्रिप्ट, मोदी टाइम का स्क्रिप्ट है. देन पर्शियन स्क्रिप्ट एंड देयर डेवलपमेंट. सो ये अलग अलग स्क्रिप्ट है. ये स्क्रिप्ट कैसे डेवलप होते गया, जो लोगों को ये पर्शियन स्क्रिप्ट या ब्रह्मी स्क्रिप्ट आता है वो लोग ही वो डॉक्यूमेंट स्टडी कर सकते हैं. सो studying about that script is also important. So we need to have knowledge about the script. जो ancient documents है ये इंग्लिश में या मराठी में अवेलेबल नहीं है, ये ancient लैंग्वेज में अवेलेबल है, जैसे मोडी लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज और ब्रह्मी लैंग्वेज उस लैंग्वेज में अवेलेबल है. So studying about that language is also important. If we know this language, then only we can study the historical document. Then basic knowledge of social organization and tradition, literature and culture, dynasties, administrative system etc. of past societies. तो पास्ट में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, कौन ज़्यादा सुपीरियर था, कौन इन्फीरियर था, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा. देन ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन कैसे था लोगों का, क्या क्या कस्टम्स फॉलो करते थे, क्या क्या रिलीजन फॉलो करते थे. देन लिटरेचर, व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स दैट आर अवेलेबल, व्हाट वाज द कल्चर ऑफ द पीपल, हाउ वेर द पीपल रेस्पेक्ट, दे वर प्रेइंग टू एनी गॉड, दैट ऑल्सो वी नीड टू स्टडी. इफ वी आर स्टडिंग दिस, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पीपल. देन डायनेस्टीज जो था, जो घराना था, राजा का जो किंगडम होता है, जैसे मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट एम्परर वाज बाबर. सो आफ्टर बाबर देर आर डिफरेंट लीडर्स, लाइक वी आर हैविंग अकबर, लाइक जहांगीर, और वी आर हैविंग औरंगजेब, शाहजहां, ये अलग अलग मुगल एम्परर है. तो ये डायनेस्टी है, उनका घराना है, तो ये घराना के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है. इफ यू टॉक अबाउट मराठा, so we will first is छत्रपति शिवाजी महाराज, so after that छत्रपति संभाजी महाराज, then राजाराम महाराज, ये अलग अलग लीडर्स है. तो जो किंग है उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. सो डायनेस्टी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा. देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहाँ ऑफिसर कौन से थे, किंगडम कैसे चलता था, किंगडम में कौन कौन से ऑफिसर थे, दैट ऑल्सो वी नीड टू स्टडी. देन पास्ट सोसाइटी, सो दिस स्टडी शुड बी डन अबाउट पास्ट सोसाइटी. पास्ट में जो सोसाइटी था, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें ये अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करना पड़ता है. देन नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग. सी स्कूल्स आर नॉट लाइक आवर स्कूल्स. सी स्कूल्स क्या होता है, एक स्टाइल होता है पेंटर्स का या सिंगर्स का, पेंटर्स का एक स्टाइल होता है, जो आर्टिस्ट का स्टाइल होता है, एक जो मेन आर्टिस्ट है उससे सब इन्फ्लुएंस होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ए स्कूल ऑफ आर्ट. स्कूल मतलब एक जो आर्टिस्ट है या एक टाइप का आर्टिस्ट होते हैं, जैसे उनका एक टाइप का कलर कॉम्बिनेशन होता है, एक टाइप का पेंटिंग का स्टाइल होता है. सो ये स्टाइल के बारे में, ये स्कूल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा.
सो नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरल आर्ट. सो स्कल्पचर्स बनाते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उनका भी एक अलग स्टाइल होता है, स्पेसिफिक स्टाइल होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान में कुछ अलग स्टाइल होगा मूर्ति बनाने का, महाराष्ट्र में कुछ अलग स्टाइल होगा. सो ये एक स्टाइल होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्कूल ऑफ आर्ट. सो वी नीड टू स्टडी अबाउट दैट. देन हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट. सो ये कैसे डेवलप होते गया, स्टाइल कैसे इवॉल्व होते गया, वी नीड टू स्टडी अबाउट दैट. Then knowledge of type of paper and ink and color. So what was the kind of paper that was used, or what was the ink that was used. लिखने के लिए क्या कैसा ink use करते थे, colors कैसे use करते थे, that we need to study. colors कैसे बनाते थे, that also needs to be studied. So if we are studying this, then we can understand how much people were developed. Then knowledge of properties of various stones and metals used for inscription. So stones use करने के लिए, या स्टोन जो यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए, ये कैसे कैसे स्टोन्स यूज़ करते थे. अगर कोई चीज़ के ऊपर लिखना था पहला, तो पेपर, बहुत पुराने टाइम पे पेपर नहीं अवेलेबल था, तो वी वर राइटिंग ऑन स्टोन्स. सो वी वर चेकिंग व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स दे वर यूजिंग. सो दिस ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच पीपल वर डेवलप्ड. Then knowledge of equipment and chemicals used in various processes of cleaning, conservation and preservation. So conservation करने के लिए, preservation करने के लिए, historical documents का preservation करने के लिए, conservation करने के लिए हमें कुछ chemicals का ज़रूरत होता है. So we need to be aware what kind of chemicals are necessary for conservation or preservation of the historical documents. Then knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology. See, in different part of the world, the exhibitions in the libraries are different. So libraries में अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है. जैसे इंडिया में अलग मैनेजमेंट होगा, यूएसए में मैनेजमेंट अलग होगा. सिमिलरली म्यूजियम को कैसे एग्जीबिशन करना है, म्यूजियम में थिंग्स को कैसे अरेंज करना है, इंडिया में अलग होगा, फ्रांस में अलग होगा, या ब्रिटेन में अलग होगा, या फिर यूएसए में अलग होगा. ऐसे अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट का स्किल्स होता है. और देर आर डिफरेंट अप्रोचेस. So knowledge of various approaches of or managing exhibitions in museums, galleries and information technology is very important. जो galleries होती है, आर्ट गैलरी होती है, जिसमें अलग अलग आर्ट का एग्जीबिशन होता है. ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का आर्ट होगा, और उसका एग्जीबिशन में अलग अलग टाइप का होगा. सो वी नीड टू स्टडी अबाउट दैट. अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, उसका भी स्टडी करना पड़ता है. सो लाइब्रेरी साइंस करके स्टडी होता है. म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम को हैंडल करने के लिए कोर्स होता है. सो वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ वी शुड बी मैनेजिंग द म्यूजियम, और हाउ वी शुड मैनेज द लाइब्रेरीज. सो ट्रेनिंग द पीपल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल. ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद, हिस्ट्री को बारे में स्टडी करने के बाद, हमें रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करना पड़ता है, आर्टिकल्स पब्लिश करना पड़ता है, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. देन वी विल टॉक अबाउट मटीरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स. जो आर्टिस्ट ने जो भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाया था, या आर्टिस्ट ने कुछ काम किया था, ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं. देन क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस. सी कुछ जो आर्टिफैक्ट्स है, या कुछ जो स्कल्पचर्स है या मूर्ति है, ये अभी रिसेंटली बना हुआ है, कुछ पुराना है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा मूर्ति कितना पुराना है, और उसे उस तरफ से मैनेज करना पड़ता है कि जो पुराना है वो हमें केयरफुली स्टोर करके रखना पड़ेगा. सो वी नीड टू स्टडी हिस्टोरिकल डेट कितना पुराना है उसका. देन वी नीड टू स्टडी द हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस. तो उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा. जैसे बुक में हमारे इंडेक्स होता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उस हिसाब से उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन का भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा, सो दैट इट इज ईजियर टू आइडेंटिफाई द डेटा. सपोज वी नीड टू स्टडी विच वेर द डिफरेंट वेपन्स दैट वेर यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज. सो एक हमें अलग तरीके से शिवाजी महाराज, उनके टाइम पे जो भी वेपन्स थे उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, so that it will be easier to identify what were the different weapons that were used during Shivaji Maharaj. So creating the index is also important. Index is usually used to classify the information. Then completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for conservation and preservation of collected documents. So again, जो document हमने collect किया, उसका मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. प्रोसेसिंग करने के बाद उसे क्लीन करना पड़ेगा, और उसे अगर कुछ चीज़ खराब हुआ है तो उसे वापस हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी स्टोर्ड प्रॉपरली. देन अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स फॉर देयर रेप्लिकास और देयर रेप्लिकास. सी, अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उसका रेप्लिका बनाएंगे, उसके जैसा डमी फिगर बनाएंगे, और उसे स्टोर करेंगे, उसे एग्जीबिशन में पब्लिश करेंगे. सपोज ताजमहल तो एक ही जगह है, तो उसका ताजमहल को अगर हमें म्यूजियम में दिखाना है कि ताजमहल कैसा है, तो ताजमहल का सिमिलर हम रेप्लिका बनाएंगे. तो रेप्लिका देख के लोगों को पता चलेगा कि ताजमहल का स्ट्रक्चर ऐसा है.
So studying about this is also important, or verify or to make artifacts or to publishing research articles. जो रिसर्च किया उसका आर्टिकल्स पब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट पीपल हु आर नॉट स्टडिंग दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड what is the what are the different source of history and what is written in the source. सपोज मुझे पुराना कुछ लिखा हुआ एक केव पेंटिंग मिला, so या केव में कुछ लिखा हुआ मिला. Common man is not having the information whether what is written on the cave. So there are some historians who are studying. After their studies are over, they are publishing some report. That reports are published in English, Hindi or Marathi, so that common people can understand what is written in the cave. So publishing the report, research articles is also important. Classifying fossils of plants and animals and preparing indexes. So animals का जो remains मिला, plants का remains मिला हमें, ये remains को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कितना पुराना ये प्लांट है या एनिमल है. सो ये करने के बाद हमें पता चलेगा कि उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि पुराना जो थिंग है उसे हम पहला बनाएंगे, रखेंगे, उसके बाद नया चीज़, उसके बाद नया चीज़. इसका इंडेक्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रेप्लिकास. सो फॉसिल्स जो है उसको एग्जीबिशन में रखेंगे. सपोज डायनासोर का कुछ हमें फॉसिल मिला, रिमेन्स मिला, तो हम उसे एग्जीबिशन में रखेंगे. नहीं तो रेप्लिका बनाएंगे डायनासोर का, एक डमी फिगर बनाएंगे डायनासोर का, सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड हाउ वाज डायनासोर एंड हाउ वेर द लिविंग. देन व्हाट आर द नेसेसरी ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सो बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. सो वी नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड. सो आर्कियोलॉजी में कैसे स्टोर करते हैं, कैसे हमें जो पुराना डेटा मिलता है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, दैट इज आर्कियोलॉजी. सो वी नीड टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट दैट. देन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये अलग अलग सिविलाइजेशन है. इस सिविलाइजेशन के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा. वहाँ के लोगों का लाइफ कैसा था, क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे. दैट थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. स्टडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Then knowledge of regional source of material like stones, minerals, metals, clay used in production of artifacts and their chemical properties. So we need to have the information about the regional source of material. Suppose we talk about Taj Mahal. So Taj Mahal में जो stone use किया था, marble use किया था, that is basically found in Rajasthan. So हमें study करना पड़ेगा कि ये जो material use किया है बनाने के लिए कुछ चीज़, वो कहाँ से available हुआ. So we need to have knowledge about the regional source of material like stones or minerals, metals, precious stones और clay. So हमें पता चलेगा. अगर वो चीज़ हमारे कंट्री में नहीं मिलता है, कहीं बाहर से लाया है, तो we can understand. See, people from this country were having good relations with people from other countries, so that they could buy or they could bring that material in our country. So अगर कुछ monuments बनाने के लिए हमारे पास material available नहीं था, हमने कोई बाहर की कंट्री से लाया, तो हमें पता चलेगा कि उस कंट्री के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस थे. देन नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस. सो वी नीड टू हैव नॉलेज टू क्लीन द डॉक्यूमेंट्स एंड क्लीन एंड यूज केमिकल प्रोसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस. नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ स्टाइल एंड देयर डेवलपमेंट. सो अगेन अलग अलग टाइप के जो थिंकर्स, अलग अलग टाइप के जो पेंटर्स होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है. सो उस स्टाइल के बारे में, हम स्टाइल को बोलते हैं स्कूल ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ स्टाइल. तो उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा. नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास, मॉडल्स. सो ये डमी फिगर मॉडल जी, बड़ा अगर कोई मॉन्यूमेंट है उसे अगर हम छोटा मॉन्यूमेंट बनाएंगे, उसका एक रेप्लिका बनाएंगे, so people who are not able to go and visit that monument, so they can also see the replica and they can also understand how the monument is. And fossils, so fossil का भी replica बनाएंगे. Then knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology. Again information technology is important. So अगर हम कोई म्यूजियम है, उस म्यूजियम के बारे में या म्यूजियम में कुछ चीज़ रखा है, पेंटिंग रखा हुआ है या कोई स्टैचू रखा हुआ है, उस स्टैचू के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें पता चलना है, तो हमें गाइड की ज़रूरत होती है, जो गाइड बताएगा. अगर मैंने वहाँ जाके एक ऑडियो विजुअल एक वीडियो बनाया या फिर कोई ऑडियो बनाया कि हम ईयरफोन लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे और उस मॉन्यूमेंट के पास जाएंगे या फिर उस स्कल्पचर के पास जाएंगे, पेंटिंग के पास जाएंगे, तो अपने आप उस पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ, और हमने कोई ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, दिस इज बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन get information about all the different things or historical things, and information technology is also useful in managing the museums.
सो नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन. सो एग्जीबिशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, हर एक कंट्री में अलग अलग अप्रोच होता है. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट म्यूजियम्स. So you will understand how the different museums are managing the things. Then writing research reports and articles. So again, whatever research we are doing in material source of history, we need to write the articles and we need to publish the reports so that future generation or the people who are not knowing not having technical knowledge about the history, they can also understand what is written in that or what is written in the material source of history. So here we concluded the first part of the chapter. In the second part, we will talk about some famous museums in the world and also famous museums in India. So hope you have understood the first part. If you have understood, share the video with your friends and subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel, and thank you for watching.